Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will do articles. Let's learn. Look at the picture and notice the word in color in the speech. What do you like to eat? A banana or an apple? I have also made some pudding. Aha! The pudding you make is the best. In this dialogue, the words in color a, n and the are called articles. जो a, n and the हैं, a, n and the, ये क्या है? These are articles. We use articles before nouns to show whether they are general or specific. Noun से पहले हम क्या शो करने के लिए यूज करते हैं इनको, कि वो जनरल है या स्पेसिफिक है. A and N. A and N are called as indefinite articles because they refer to a person or thing which is indefinite or unknown. We use A or N. जो indefinite है या unknown person है, उससे पहले हम किसका यूज करते हैं? A और N का. Number 1, when we talk about something in general and which not specific, I need a new bicycle. I need an umbrella. जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो स्पेसिफिक नहीं है, तो हम आ या एन का यूज करेंगे. When we talk about something new and which is introduced for the first time, I have a bicycle. I have bought a new dress. जब हम किसी चीज के बारे में जब बात कर रहे हैं और उसके बारे में बात हम पहली बार कर रहे हैं, तो आ और एन का यूज करेंगे. To indicate that someone or something is one in number. अगर आप ये दिखाने जा रहे हैं कि ये एक है, तो भी आप किसका यूज करेंगे? आ या एन का. There lived a king many years ago. I have eaten only an apple. A, an. Now note, we use a before singular nouns that begin with a consonant, and also before nouns that begin with vowels but gives a sound of consonant. For example, a book, a river, a dog, a parrot, a union, a European, a unicorn. हम आ का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? जो कंसोनेंट्स होते हैं या जो कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं. Number 2, we use and before singular nouns that begin with a vowel sound and also before nouns that begin with a consonant but give the sound of a vowel as silent H. For example, an owl, an apple, an ice cream, an umbrella, an hour, an honorable man. An का यूज हम vowel से पहले करेंगे या vowel sound से पहले, चाहे वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, लेकिन अगर साउंड आपको वॉवल का देता है तो हम एन का यूज करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एन आउल, एन आवर, एन ऑनरेबल मैन. राइट. द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल. इट शोज दैट द नाउन बिगिन स्पोकन अबाउट इज डेफिनेट, पर्टिकुलर और already known to us. We use the. अगर नाउन पर्टिकुलर है, उसको हम पहले से ही जानते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे? द. और द को हम इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं. नंबर 1, बिफोर यूनिक नाउन्स एज द सन, द मून, द अर्थ, द बाइबल, द गीता एटसेट्रा. अगर यूनिक चीज़ हैं, सन, मून, बाइबल, गीता, आपकी रिलीजियस बुक्स हैं, तो उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं. बिफोर नाउन्स ऑलरेडी नोन टू द लिसनर. उस नाउन से पहले जो पहले से ही जिसके बारे में लिसनर को पता होता है, तो हम द का यूज करेंगे. वेयर आर द कीज? पुट ऑन द कैप आई बॉट फॉर यू. बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशियंस, सीज, माउंटेन रेंजेस, countries with plural names or containing the words kingdom, republic, state, etc. For example, the Ganga, the Indian Ocean, the Himalayas,
the United Kingdom, the United States of America. Number 4, to refer to a time period or a part of the day. For example, in the 1980s. 1980s क्या है? Time period. In the past, in the morning, evening, noon, etc. I hope आपको आर्टिकल्स क्लियर हो गए. Now it's time to revise. You can revise it.